आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड इफ यू आर न्यू हियर लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रियंका एंड मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर। सो यस, अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। Without wasting any time, let's start the video. Hi again, and monsoon season अभी चल रहा है and I love the rain, but let's be honest, this season brings extra humidity, breakouts, frizz and even fungal issues. But don't worry, I have got you covered. Today I'm sharing a complete monsoon care guide. Rainwater, humidity and pollution can damage our hair. Here how to keep it healthy. Wash hair 2 to 3 times per week with mild shampoo. Always dry completely. Never tie wet hair. Oil lightly before washing, not after.
Skincare essentials for monsoon. Step 1, gentle cleansing. In monsoon, skin gets oily and attracts dirt. Use a mild non-foaming cleanser twice a day. If you have acne-prone skin, try a salicylic acid cleanser at night. And then step 2 is lightweight moisturizer. Humidity means heavy creams can clog pores. Go for a water-based gel moisturizer that hydrates without greasiness. Then step 3, gel based sunscreen. Yes, sunscreen is a must even on cloudy days. UV rays still reaches through clouds. तो इंटरनेट में कुछ मिथ्स हैं जिनके बारे में आज बात करना चाहूंगी और ट्रूथ क्या है मैं वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहला मिथ तो ये है कि जो एक्ने होते हैं वो केवल टीनेजर्स को होता है। तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्यू टू ह्यूमिडिटी, डाइटरी चेंज, हार्मोनल बैलेंस, जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इनकी वजह से एक्ने किसी भी एज में हो सकते हैं। एंड द सेकेंड इज कि अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उसे मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें भी मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ता है। बट ये होता है कि उनको थोड़ा लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, सो दैट वो जो ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है उसको बैलेंस कर सके। तो इसीलिए ऑयली स्किन वालों मॉइस्चराइजर लगाया करो। एंड द थर्ड इज कि जब क्लाउडी डेज होते हैं तो तब हमें सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए, जैसे कि अभी चल रहा है मानसून के टाइम पे, क्योंकि मोस्टली बारिश होती रहती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 80% जो यूवी रेज होती है वो फिर भी पास हो जाती है क्लाउड से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई सनस्क्रीन। Monsoon can also cause fungal infection, especially in feet and folds of the skin. So use gentle pH balanced body wash, keep it dry, wear breathable footwear, apply antifungal towel to moisture prone area. For a natural scrub, mix rice flour, honey, coconut oil, neem powder and use twice a week for smooth bacteria free skin. दैट्स इट फॉर द डे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।